एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और एग्ज़ाम के सीज़न के साथ A2 अकेडमी आपके लिए लेके आया है हर एग्ज़ाम का वन स्टॉप सोल्यूशन, एवरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अंडर वन चैनल ऑन A2 अकेडमी। जैसा कि आपको पता है जुलाई में होने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स, एक है आपका UPSC EPFO और दूसरा है CGL। इन दोनों एग्ज़ाम्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए हमारा प्रोग्राम 1 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ EPFO। अब EPFO है क्या भला? EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPF एक्ट 1952 के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है और any company which has 20 or more employees have to obey this act. This provident fund is added to your salary and provided to you when you retire, when you leave your job, as a part of your salary compensation. EPFO का एग्जामिनेशन जो है वो UPSC कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे चुके हैं। इस साल की फॉर्म्स बंद हो चुके हैं, 3 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है और इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है EO एंड AO पोस्ट के लिए। इसका पैटर्न सिंपल है, 2 स्टेजेस हैं, एक है रिटन एग्ज़ाम, एक है इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम विल बी ऑफ 120 मिनट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स। रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स है 300 और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 ऑफ द स्कोर। नॉर्मल सिलेबस है जनरल इंग्लिश, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, फ्रीडम स्ट्रगल, करंट अफेयर्स, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज। इसमें डिफरेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है जॉब से रिलेटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन है जॉब सेक्टर से रिलेटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन है सैलरी से रिलेटेड। सो आपके लेबर लॉज से रिलेटेड करंट अफेयर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। मैथ का पोर्शन भी इसमें आ जाता है, मैथ का पोर्शन भी कवर हो जाता है। इफ़ यू सी इंग्लिश, बेसिक हिस्ट्री पॉलिटी आपकी, मैथ्स और मैथ, ये आपका CGL का कॉमन सिलेबस हो गया EPFO के साथ। तो इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एनी SSC examination, UPSC examination, then this becomes an easy thing for you to do in 1 month. Another thing that is different in this examination is social security in India. Social security in India आपको इसके अलावा एग्जाम्स में बहुत कम देखने को मिलती है एज अ सब्जेक्ट। आपको करंट अफेयर्स में मिल सकता है बट एज अ सब्जेक्ट इट्स डिफरेंट। तो मेरा फोकस, मैं हूँ सोनिका वशिष्ठ और मेरा जो फोकस है वो रहेगा जनरल साइंस। और जनरल साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बायोलॉजी जिसको हम लाइफ साइंसेस भी कहते हैं, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो बेसिक सिलेबस है दैट इज़ कवर्ड फ्रॉम योर क्लासेस 8th to 12th। जनरली 8 to 10th का आता है, 12th 11th का कुछ पोर्शन जो जनरल नॉलेज में आ जाता है वो हम कवर करेंगे। विल नॉट गो इनटू डेप्थ, नीट नहीं देना है हमें, EPFO देना है। सो बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, मेटल नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस सॉल्ट, केमिकल फिजिकल चेंजेस एंड बेसिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हमारा जो वीडियो है वील स्टार्ट इट विद स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर सबको पता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर मैंने यहाँ 5 लिख रखे हैं। नाउ यू विल आस्क वेयर डिड दीज 2 एक्स्ट्रा कम फ्रॉम? These 2 extra come as Bose-Einstein gases and plasma. Now what are these? Bose-Einstein gases, as you can see, Bose, Indian scientist, Einstein, everybody knows him. Super low temperature with low density, a gas at a very low temperature with very low density acquires a state of matter that is different from the classic 3 and it is known as Bose-Einstein gas. Then we have plasma. If you know, a plasma is a
solid liquid kind of material. It is not entirely solid, it is not entirely liquid. It is a different state of matter at a specific temperature scale. So it is also a different state of matter. That's why we have written 5 states of matter instead of 3. But classic, every experiment is done on these 3 only. Now we have 5 states of matter, okay. But what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Okay. What I'm saying here is anything that occupies space and has mass. So you sitting on your chair, you're covering a chair, you're occupying a space, and you have certain weight, you have certain mass, you are matter. A chalk, air, any gas in the air, water, even a water droplet, even a tiny water droplet is matter. Okay, now I have written mass, right? And you will say that, ma'am, we can say weight also. Now what is the difference between mass and weight? Mass and weight are not same. Okay, mass is the absolute measure, whereas weight is the gravitational measure. Whenever you add gravity to mass, it becomes weight. So my mass will be same on every planet, but my weight will be different on every planet because of difference of gravity. Okay, so mass and weight are not same. Now we discussed that there are 3 states of matter, right? Solid, liquid, and gas. Do they change their forms? We all have learned one thing in our childhood, that energy or matter cannot be created or destroyed, but they can change forms, right? So solid can turn into liquid, liquid can turn into gas, and vice versa, gas can turn into liquid, liquid can turn into solid. But if I'm turning ice into water, does the temperature change? If I have like ice at 0 degrees Celsius and I melt it, so my water is equally chilled, right? My water is equally chilled. How? Where does this energy go? Where does this energy come from to turn it into liquid? This energy is absorbed by solid as latent heat. Okay, so whatever the process is, the energy will be absorbed and it will be known as latent heat. So now see here, if I'm turning solid into liquid, that is the process of melting, right? So my latent energy will be known as latent heat of melting. Okay, similarly, if you turn liquid into solid, that is freeze, energy is absorbed here also. Then you have liquid to gas, vaporization, gas to liquid cooling, and solid to gas sublimation. Now where have you seen solid to gas? You see solid to gas conversion almost daily in your life. Whenever you go to a temple, whenever you do puja, you use a thing called camphor, right? Kapoor. You burn camphor and it immediately turns into gas. That is the process of sublimation. Solid turning into gas. You might also have seen this process in dry ice. What is dry ice? Dry ice is nothing but solid CO2, right? That is used in shows and everything. It produces a good amount of smoke, a smoke show kind of thing. And this dry ice also just converts from solid to gas. Okay, this was our introduction about states of matter. We'll start our syllabus in detail from 2nd of June 2023, covering every general principle of science that is in your exam, along with PYQs, and videos for other subjects will be available on this channel only. If you have any doubt about syllabus, about preparation, about any examination, you can use any of our social media link and message us, drop a DM, and we'll reply as soon as possible. So, thank you, bye bye, and stay in touch.